three essential things. And remember I said I'll take up something new also next time. But for those who practice regularly, and if you are not able to practice regularly, then you just make it a point to keep coming back. If not every month, then at least once in 3 months, so that the link is never broken. Plus, we have to graduate to 2 minutes. Remember, I said that in the there at DA Road as well, right? 2 minutes, second month, and 3 minutes, the third month. So then real change will start to happen. Otherwise, what will happen if we just keep doing practices, then वो जो चीज़ जो चाहिए वो नहीं होगी. That real thing will not happen so much. It will just be about good health, which is okay. So if you are satisfied with good health, that is also okay. But most people who come to learn 3-step breathing is about something else also. Health तो है ही. Three things. One, we don't know where we've come from. We didn't make ourselves, right? So it would be a little immature and childish to assume that we know what life is all about, and if something is wrong in our lives, we know how to correct it. We just go about the best we can do, not really knowing what is the right thing to do. Nobody knows that. But we manage to get about with whatever information we trade with each other. Two, not knowing where we have come from and how we were born and how did we acquire this body, how does the body work, we obviously don't know what to do if it stops or something goes wrong, right? So we don't know. Suppose if this is 0 and this is 70 and we're living life in between, what happens before that 0 and after the 70 we have no idea about, right? But we know that, but we assume that we know whatever is happening between the 0 to 60, or 0 to 70, which a person like Patanjali says is avidya. Marathi में एक word है काड़ोक कहते हैं उसको, the word काड़ोक. It means utter darkness. Deep darkness. Kaड़ोक. Deep dark. Midnights. Really dark. यहाँ पे हाथ रखो तो दिखेगा नहीं इतना dark, right? This darkness that Patanjali refers to is, and a gentleman called Gurdjieff in Russia in the late early 1900s said the problem to knowing something is that man believes he already knows. That is the problem. अगर किसी को पता है, लगता है ऐसा कि मुझको सब पता है, तो वो और आगे सीखने की कोशिश करता ही नहीं. और हमें ये लगता है कि मुझको कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट के बारे में सीखना होता है, और एक सब्जेक्ट के सीखने के लिए I have to specialize in that subject, and that is enough for my livelihood. And other things that we already learned, कैसे बात करना, कैसे behave करना, communication करना, तो ये हमको तो वैसे भी आता है. इसी अंधकार में रह के हम लोग आगे कुछ और सीखने की कोशिश नहीं करते, thinking that we know it all anyway. And if we don't know something, that is because it's a specialized subject and I don't need to know anything about it. ऐसे ही करते हैं ना हम लोग. So we outsource the specialized information, knowledge, understanding, and subsequent implementation of that knowledge to specialists, like say a doctor, okay, an engineer, somebody who is going to do only that much. We don't need to know anything about it. तो अगर हमारे में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो we outsource the job. We can't do anything about it ourselves. We all outsource most of these things. Right? ऐसे ही होता है. Third, not knowing where the system comes from and not knowing where will it go or where it's going, and believing that we are in charge of our lives in the interim period between 0 and 70, the biggest reason, the only reason, rather I would say, is non-communication with
the thing, the power, the person, the entity who made this thing. If there is something created, it presupposes a creator. आप भी नहीं कोई मानोगे कि ये अपने आप आ गया हवा में से, कोई बनाया होगा तो ही आया होगा। लेकिन हमारे बारे में हम लोग ऐसा कुछ सोचते नहीं कि मैं कहाँ से आया, अपने आप नहीं तो भी आ गया, राइट? अपने आप आ गया। और अगर ईश्वर की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, तो some guy sitting on some throne which is controlling, who's controlling every destiny, in some arbitrary manner, as if he has no other business to, but to control everybody's lives, and we make God in the image of our own, in our likeness, ascribing those qualities that we have of attraction and repulsion at a basic level. I like it, I don't like it, and we ascribe this fundamental quality as well, also to a God, if there could be a God. So ना ही हम लोग रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं कभी, बुराई हो गई तो किसी और पे थोप डालते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छाई हो गई तो हाँ आई डिड इट। एंड ऐसे अंधकार में हम लोग रहते, जब disease strikes, ill health strikes, something goes wrong in life or keeps going wrong in life, उस टाइम पे सब नशा चकनाचूर हो जाता है, उस टाइम पे हेल्पलेसनेस फील हो जाती है। Slow down the disco, backpack. Slow down on the backpack. So we've learned now how to overcome these crisis situations, and giving ourselves mental dialogues, निकाल देते हैं, thinking that phase चल रहा है या somebody is responsible वगैरह। So we have these dialogues. Because of these dialogues, we are never able to feel a feeling. खुशी होती है, दुख होता है, लेकिन मेंटल इंजेक्शंस हम इतने देते हैं अपने आप को कि we are never able to feel the feeling. We are never able to communicate with our internal structure. We don't know what our heart is saying to us. The day we have a heart attack, can you really believe that if an illness strikes you, or if somebody is angry at us for something, or if you are angry at somebody for something, is it possible that that illness has suddenly in that moment sprung up and has happened to you, and you've collapsed or something, or the doctor detected something is wrong? Is it possible that it happened only in that moment? Possible है क्या? वो obviously अंदर germinate कर रहा है, बहुत time लग रहा है। जैसा आपका गुस्सा है, किसी और का गुस्सा है, so somewhere discomfort starts from a very long time, prior to its symptom being apparent. शास्त्र से 6 महीना लगता है उसको सिम्टोमेटिक बनने के लिए, मतलब सिम्टम अपने अंदर मालूम पड़ेगा कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो सिम्टोमेटिक बनता है। A person with great sensitivity can sense that ये तो मेरे अंदर कुछ तो भी ठीक है। Some things that happen to most of us are climatic changes के वजह से we will get maybe a headache, a fever, a cold, a cough. तो बाहर का जो वातावरण है वो बदली हो जाता है, प्रदूषण की वजह से ये सब हो सकता है, या किसी और के बर्ताव की वजह से। अगर आपने मेरे साथ में बनावट से बर्ताव नहीं किया तो मुझको गुस्सा आ जाएगा, अगर अच्छी तरह से बर्ताव किया तो मेरा ईगो खुश हो जाएगा और मैं प्रसन्न होकर आपसे प्यार से बात करूँगा, अच्छी तरह से बात करूँगा, राइट? We always oscillating between these two. Is that not true? Always like that. So that means just with the climate, even with the human being, we are always dependent upon something external to ourselves which changes our internal structure. If I have a cold, I say ठंडी है, मौसम बदली हो गया है, इसलिए ठंडी हो गई है, या गर्मी है। तो मेरी मुझको अगर हेडेक हो रहा है, you spoke to me in this manner. If I am happy, then my husband bought me a gift, or my food was so good that everybody liked it, or I did this amazing, I achieved my target, if everybody is happy with me, or I achieved my target and that is why I am happy. Something external, always. With this attitude, we will never be able to point a finger over here and say something has to be done here because the cause is this.
So even if I'm angry, this must be the cause. Even if I'm in love and happy, this must be the cause. That's obvious, but if you look at it every day, with every situation, with every thought and feeling, you will realize that it is not about somebody else, it's about me. But problem ये है, दो आंखें दी हैं ईश्वर ने जो बाहर देखती हैं, कोई भी आंख नहीं जो अंदर देखती है, लेकिन हम लोग के पास वो जागृति नहीं है, उसको कहते हैं जागृति, विवेक। क्योंकि हम ये खुद नहीं कर सकते हैं, पतंजलि कहता है कि एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके थोड़ा सिस्टम को स्लो डाउन करके, बिकॉज वी आर स्पीड अप, really badly speeded up, especially in a city like Bombay, so all of us are speeded up. We are filled with excitement, जो हमें normal हो गया आज। In fact, if we slow down a little bit, तो बोर हो जाते हैं हम लोग। We can't stand it. There's some activity to do all the time. Even if I'm sitting like this guy is racing, no? Always thinking about the past or the future, planning for the future. ये हर पल चलता है। बॉडी की जो अवस्था है वो हमें नॉर्मल लगती है, जो कि नॉर्मल बिल्कुल ही नहीं है। हमने उसका कॉन्ट्रास्ट को एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसके लिए ये नॉर्मल लगता है। बट डीप रिलैक्सेशन जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वी विल नेवर वांट टू कम बैक टू दिस स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट और स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन। हालांकि हम अपना काम भी करते रहेंगे, लेकिन अंदर से कुछ हिलेगा भी नहीं, सो शांत, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसकी स्पीड माय मास्टर, उनका कोई भी आज तस्वीर नहीं है यहाँ पर। माय मास्टर नेम इज सोली तावरिया। He taught us the technique of 3-step rhythmic breathing. He left his body in the year 1994, and he said that the speed of thought in a human being is 120 thoughts per second, out of which we are aware of only sometimes only one, not to all the time, that just one thought comes to the surface level, बाकी 119 अंदर सिस्टम में चले जाते हैं। He said that a total of 30,000 impulses come in the body to keep the body going, the upkeep. How are we alive? We have no idea, no? How are we alive? पैदा हो गए, एक दिन अपने आप क्यों मर जाएंगे? कुछ तो भी होगा ना इसमें, चलने का some mechanism, some power, you know. We are not going to believe that the TV, the laptop comes on by itself. We think we are always the same, always on. Always on भी नहीं होता है, एक पल के लिए कुछ और भी होता है, which I won't go into now. He said out of these 30,000, 120 go up to the brain. Out of those 120, one becomes a thought, which we are thinking right now, but this is very speeded up and we can't slow down, and that's why our energy is always going out. When we get tired, every night we get tired and we go to sleep, and one day 70, 75, 80, whatever, we get completely tired and we go to sleep for a longer time, not permanently, for a longer time. यहाँ पे रोज रात को सो जाते हैं, सुबह को अपने आप को उसी शरीर में पाते हैं, कोई वंडर नहीं करते, रात को भी इसी में सोया था, सुबह को भी इसी में उठ गया, क्या रोज का है, इतना बोर हो गया है, मतलब सोचते नहीं। एक दिन लेकिन रात को इसी में सोए थे, सुबह को किसी और में पाते हैं, डर जाते हैं, कि आदत नहीं है ना, इतने साल से एक ही बॉडी में घूम रहे तो, और ऐसा सोचते भी नहीं, सोचते थे रोज यही बॉडी चल रही है, क्या है नाटक वाटक, सोचते भी नहीं ऐसा। बिकॉज अटैचमेंट इतना हो जाता है एक ही बॉडी के साथ में, तो उसको कुछ हो जाता है तो हमें बहुत चिंता होती है ना। हाल फिलहाल चिंता होती कि नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। तो हाल फिलहाल इस बॉडी का जो अटैचमेंट है और जो उसकी जो चिंता है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसको हेल्थ में रखेंगे कि वो थोड़ा शांत करें। इफ देयर इज, पतंजलि सेज कि द फर्स्ट ऑब्स्टिकल टू understanding self is bodily disability, ill health. So we got to take care of that first. Subsequently, keep coming back and you will learn more things.
Of course, not just here, this is still the beginner session. So, जैसे आपको मैंने कहा, Khar is a better place to come to learning more things, right? The first step is to take care of the, not just the body, but the mind, emotions and the body. So that health happens, or rather remains. How do we do that? So my master said, since thoughts come at 120 thoughts per second, that's an unbelievably high speed, right? He said, let us slow down, not the speed of thought, but to slow down ourselves so that we can see these as many as possible and not react to it all the time. This is what we do, no? आपने ये कह दिया तो I react to it. आपने वो कह दिया तो I react to it, right? This is just action-reaction going in which we waste a lot of energy. The first thing to do is to calm and slow down the system. How do we slow it down? So he said, if you breathe at a certain rhythm, automatically, जो इस शरीर में बहुत सारे organs हैं, सबको ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, लेकिन पूरी की पूरी ऊर्जा ये चोरी करता है, because we are thinking obsessively all the time. तो जितना शरीर के अपकीप के लिए एनर्जी जानी चाहिए हर ऑर्गन में, ये वो जाती नहीं है. That is why we get tired, or have a headache, or react with anger, or are scared of the tomorrow, don't know what to do. Nobody knows what to do, right? And we think this is normal. To die is normal, right? That is what we think. सब लोग पैदा तो मरना ही है. हाँ, मरना तो है ही, because the body का generation हो गया तो body का वो degeneration होना ही है. Body का मरना और आपका मरना ये दो अलग अलग चीजें हैं. But we do not know what that is. We think we are the body. The huge difference. जितने भी लोग अभी, जैसे कि मैं 18 साल हो गया, 3 स्टेप में प्रैक्टिस करता हूँ, रोज करता हूँ, एक दिन में कभी मिस नहीं किया, मुझको ये याद ही नहीं कि हेडेक क्या होता है. I don't even remember what is a headache now. And so many people, you will see that basic things have just simply disappeared, or getting tired, or having a headache, or thinking, pointing the finger at somebody else, he is to blame for my ills. You know, all of these normal human things that we do. So he said that if we slow down or breathe in rhythm, then this guy will come into rhythm. So we asked, what is the rhythm? And he said 3-step rhythmic breathing. Breathe in for 3 seconds, breathe out for 2 seconds, making a total of 5 seconds for one breath. One cycle of breath, 5 seconds. 1 minute में 12 cycles हुए. अगर ये he has told us and given a guarantee of that, अगर ये श्वास की लय अगर अपना लिए, rhythm of 5 seconds का एक breath, technique of normal volume, and breathe in totality in this area, so what will happen if you do this for 24 hours, you will then be guided by him directly. If you do this for 5 minutes every day, you will experience a slowdown, a sort of a peace. If you do it for 20 minutes every day, there will be how the cricket match में the third umpire sees, you know, जब दोनों अंपायर को दिखता नहीं ना कि क्या हो गया, बॉल लेल्बी डब्बी हो गया या कैच पकड़ लिया उसने, तो थर्ड अंपायर को रिफर करना पड़ता है, and he sees it in slow motion, तो उसको दिखता है ये आउट कि नॉट आउट था. वैसे हमने जीवन में कुछ कर लिया, you know, we regretted बाद में, लेकिन क्या करना उस पल में हमको पता नहीं होता है. So you see, then you will know exactly what should be done. 1 घंटा अगर रोज इसको प्रैक्टिस किया शांति से बैठ के, तो फिर आपके दिन में पता नहीं क्या होगा. I don't need to tell you. It will be a different situation. So we are learning 2 things today. I mean, for the 2 of you, for the 3 of you, we are revising. For the new people, we are learning, right? How to breathe correctly, in this rhythm. We practice that, and we learn one more thing. Patanjali said the modern man has become very cunning. So he cannot be told just to sit and breathe, because he never will be able to. He's just so worked up inside. So for that, he's given a set of 6
breathing exercise, which if we do every day, will get us the same results but faster. Because he's so impatient. So for that impatience, something else. सीख ले? दो चीजें कैसे करते? सबसे पहले 3-7 rhythmic breathing में rhythm, volume, technique. Volume रहेगा normal, rhythm रहेगा 3 seconds of inhalation, 2 seconds of exhalation, और technique breathe in totality. छाती और पेट में पूरी सांस लीजिएगा. कैसे करेंगे? एक हाथ छाती पर रख दीजिएगा, एक हाथ पेट पर रख दीजिएगा. For now, just sit straight. Don't slouch in your chair. For now, but घर पे तो आप जैसे बैठिए. And मैं काउंट करता हूँ, तो 3 सेकंड श्वास लेंगे, 2 सेकंड श्वास छोड़ेंगे. उसमें खाली एक ही ट्विस्ट है. 1, 2, 3 यानी कि 3 सेकंड हो गए, और 4, 5 नहीं होगा. For the outgoing breath, it will be 5, 6. You won't count the 4 for reasons that we usually can work out at that. I'll count for you. Just go with my counting and just breathe in and breathe out. 1, 2, 3, breathe in. 5, 6, breathe out. You won't count the 4. Make sure you have equal breath in the stomach and the chest. Check it. Breathe in. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Good. Now since I can't keep coming after you, count 1, 2, 3, 5, 6 all the time, what my master did was to put this rhythm into a piece of music which we play all the time, and whatever that the work that we are doing in life, we keep doing that. When the music goes on in some corner of the house or the office or in the car, and we beat to it. The music is the same 1, 2, 3, 5, 6. But now since I don't have somebody else was supposed to come who hasn't come, and I don't have that gadget with me, it's in my phone, so it goes like this. It's without the numbering, the 1, 2, 3. It just goes ting, 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 1, 2, 3, ting, ting on the lower octave, 5, 6. So just tune yourself to that, relax yourself and breathe. Say 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. You're breathing too deeply, so it's going out of breath till the time you reach 2. So go relax. Go slow. Normal volume, not too much. 1, 2, 3, 5, 6. 3, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6.
slow down हो गया ना. If you do it every day, the system will just simply slow down, right? Like how you experience it now. So because attention will go back to your own self. Right now you're always paying attention externally. Even though we are thinking about ourselves, if that may be the case, it's always about ourselves from the external perspective. What will I get? Right? You get what I'm saying? What will I get in life? No? It's all the time obsessed with that, nothing else. That's what he says is eternal. Desire, never ends. We're desiring all the time. You don't even realize it that we're desiring. It's always a desire going on. And desire takes energy outside. Paying attention to the source of the desire will keep the energy inside. We can't ever catch the source of desire. We can only look, feel and get obsessive about that what we want. Who wants it? We can never catch it. Never can catch it. With this practice, attention will go back to who wants whatever it wants. And अपने आप शांति आ जाएगा. अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. I hear so many people do this and that in life. एक किस्म का 20 मिनट का मेडिटेशन करता है कोई, यहाँ पे आप चले जाते हैं 4 दिनों के लिए, अलग अलग चीज़ें ताकि अलग अलग जगहों पे लोग करते हैं. My master said कि it is like the tail of a dog, keep it straight for whatever number of years, you let it go, it will come back to the original position. Same with the mind, कितना भी करोगे, it's an enforcement. You can't force the mind and it will hit you back with a vengeance. It has to be treated well, respected well. After all, it runs the whole thing. तो धीरे धीरे उसको every day थोड़ा थोड़ा डोज देना पड़ता है थोड़ा शांति में. हम लोग उसको एक्सट्रीम में लेके जाते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं, और वो काम भी नहीं करता है. 20-25 साल हो गए मैं लोगों को देख रहा हूँ, or going to I don't know how many places and doing nothing changes. The anger remains the same, reaction of externally remains the same, dependency externally remains the same. कोई फर्क नहीं. And part 2 of the session. ये तो पकड़ में आ गया अभी. इसको रोज करना और जितना हो सके as much as you can. Part 2 of the session में you learn and relax for some people. 6 exercises, breathing exercises that my master calls the refining exercises. Refines the entire system. From head to toe it will refine everything. Become so refined, pure, be so अच्छी exercises में से सबसे पहले. And some of you, if you come and sit on the floor, it will be much better because you will do it better. Some of you who can't and want to prefer sitting on the chairs, do that. सबसे पहले दोनों हाथ यहाँ पे रख दिए. सबसे पहली एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है, ये दिन में एक बार करना है. ये 6 एक्सरसाइज को, ये वो जो हमने पहले किया वो दिन भर का रिदम है, दिन भर श्वास लेना है उस रिदम पे. अब ये खाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिन में कम से कम एक बार या तो मैक्सिमम 2 बार. दोनों हाथ यहाँ पे रख लिए और डीपली ब्रीथ किया छाती में, और सिर्फ छाती में. आपको थोड़ी सी श्वास जाएगी पेट पे, तो डोंट वरी अबाउट दैट. डीप ब्रीदिंग, फास्ट डीप ब्रीदिंग ओनली इन द चेस्ट to the rhythm. The rhythm will be now speeded up 3 times. तो पहले 12 cycles per minute था, अब 36 cycles per minute हो जाएगा. वो जो म्यूजिक है वो मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं काउंट करता हूँ, आप लोग वैसे करेंगे. दोनों हाथ यहाँ पर, sit straight and don't work your shoulders too much. Imagine that you are sitting inside your chest and pushing your chest out. So don't go like this. Simply keep your shoulders down and go like this, as if you are pushing your chest out. Okay? करके देखिए. Breathe in, breathe out. 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 Wait. So go with what I am doing. Go with that same speed. Synchronize yourself. Alright, फिर से. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
breathe in, breathe out, 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 breathe in, breathe out. Okay, stop. It is in rhythm 1, 2, 3, 5, 6, but speed up 3 times. So it will go 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, right? But one more thing, it has to be a deep breath. पूरा का पूरा fill up करना. Don't leave space within. Ajit. The time factor, you cannot expand the thing, right? Because you are going too fast. No, 1, 2, 3 doesn't go. That is because you're just beginning with orchestra. Action. See. It's ting 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 ting. See. उल्टा कम टाइम है सॉरी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझको फॉर मी दिस इज टू मच ऑफ टाइम फॉर यू इज टू लेस टाइम Yes. इफ यू पे अटेंशन व्हाट इज लेस नाउ विल बिकम अ लॉट लेटर बात अटेंशन की है दैट्स व्हाट आइंस्टाइन मेंट व्हेन ही understood the theory of relativity. There is no such objective thing called time in the universe. It's relative to your attention. If you pay attention, this 1.5 seconds will become so much and you can breathe in so much. So pay attention, it will happen. Let's try with the music now, all of us. Yes. Again, I don't have that 1, 2, 3 in the music, but on the website you will get that music. Huh? Here on my phone, I don't have it. Check. Sit straight. 1, 2, 3, 5. I'll count for you. 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Wait. Start again. 1, 2, 3, 5, 6. 1. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Okay, stop. Able to breathe properly? उतनी हो रहा है श्वास हो रहा है उतना ये थी पहली एक्सरसाइज अभी दूसरी करते हैं हर एक एक्सरसाइज का इंडिविजुअल बेनिफिट्स है ओवरऑल बेनिफिट्स मैंने पहले कुछ बताया उसके अलावा if you are doing it in this part of the body in this area obviously we are working on the chest area and the chest area is not just about the physical part where the chest the lung the heart the ribs air going in the heart the lung processing the air sending it to the heart then sending the processed air through the blood into all parts of the body and every organ of the body getting that processed air and getting refined. This is the physical part. Psychological part. I won't speak about all the exercises because I'd rather focus on the exercises. All the explanations are there on the website, so you can read up on the site of the benefits of each and every exercise. The psychological part of this exercise is depression होने का become impossible for you to go down in life. जीवन की जो सिचुएशन है you will to face up. बल जो हम लोग को लगता है ना कि छाती में आता है हिम्मत जीवन को वो फिजिकल बल नहीं है you know you may be a thin person or a very well built person thin person may have more courage than a well built person and courage is not necessarily courage to face the life it's just anger which reacts
So there's a difference. Second, this area is the area of love. इसकी ये एरिया थोड़ी डाउन रहती है जो हमें मालूम नहीं पड़ता because we have no physical visible way of understanding कि ये तंदुरुस्त या flexible है कि नहीं है, लेकिन हमारे attitudes से हमें मालूम पड़ जाता है. If somebody we say no, I don't like this, that's a clear indication that we are rigid. We don't accept certain things in life, no? And you say no, but that is the right thing. I don't like what he's doing. But somebody else likes it, no? Who are we the authority of something, no? So each person becomes a moral authority on something or the other, forgetting that there are some things which even he does, which somebody else may not like, right? But when we see things from our perspective, it's always right. Somebody else is always wrong. This area is the area of love. इसको महाभारत में इस एरिया को कहते हैं. हमको लगता है कि महाभारत is the story of 5 brothers, their wives and the Kauravas, right? Yes, but not physically 5 brothers and a wife and 100 children, on the opposite side. Which is, if you look at it carefully, it is not possible that भाई लोग can be born from a ball of iron, एक lump of iron में से 100 बच्चे बनाते तो physically possible नहीं है. But for some strange reason, we think it's about some really 5 brothers here and 100 brothers on that side. It's a silly idea. We even consider it to be a real thing. What it is talking about is our attitude, the way we are internal. 5 brothers, 5 segments of the human body, and 100 Kauravas. Kauravas comes from the word Kuru. The Kuru dynasty, right? Kuru comes from the word. What is Kuru? To do, karna, always doing. And this always doing is ruled by whom? A king was blind. तो हमने पहले कहा ना, complete utter darkness, kadok. Darkness, he can't see only. How will he rule something, right? He can't see, but he is whom the system is being governed by. His name is Dhritarashtra. Dhrit. What does the word Dhrit mean? Blind. Dhrit doesn't mean blind. Dhrit. It's a. See, if you use Hindi a lot, which I don't find people doing it nowadays. Dhrit. Dhrad. See, the word has dhrad in it. Rigidity. Dhrad, holding on, desperately holding on. गति बोलते हैं ना, द्रुत गति. Right? Rashtra. Rashtra तो मालूम है तो क्या होता है? Rashtra means kingdom, region, area, right? Where this is the kingdom, badly holding on to this कि मैं छोड़ेगा नहीं कभी भी, और मैं छोड़ूंगा तो सिर्फ अपने दुर्योधन के लिए, right? Who's what? Epitome of anger. हर चीज में bombarding his way through life, right? Whatever he sees he wants is to defeat everybody else. उसको सब चाहिए हर पल. गिर गया, हंस गया उसके ऊपर तो उसकी जान जल रही है अंदर से. रूम में गया और उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई स्वागत नहीं करेगा, उसको तकलीफ होती है. क्या हमारी कहानी नहीं है? अगर हम लोग गुजर रहे कहाँ से कोई लोग हंस पड़े तो हम लगता है हमको देख के हंस रहे हैं. We are always insecure कि कल मेरा क्या होगा. And trying to hold on to the power that we think we have. Aided by his brother called Dushasan. आसन तो मालूम है posture, not आसन ऐसे योगा में बैठे और हाथ पैर ऊपर करके. Inner posture. दुष का मतलब क्या है? इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं. तो a bad posture within, an indisciplined posture within. Dushasan, indiscipline. His best friend Karna, which is very difficult to understand in the Indian context. हमने बैंड बजा के रखा है, समझ में नहीं आता. Think that he's a very nice fellow, but stuck on the wrong side. ऐसा कुछ भी नहीं है. वो इतना याद पर वक्त नहीं उसके ज़्यादा बात करने के लिए. And the fourth guy, the most cunning of them all, Uncle Shakuni, जो हर पल डाइस लेके गैम्बल करके जीवन की रेखा को बदली करने को देखता है. ये चारों की मराठी में एक और वर्ड है, चांडाल चौकड़ी यूज करते हैं बम्बई की मराठी में. These 4 govern the kingdom along with the blind king. उसमें एक 5 भाई जो मात खाते जाते keep losing out, but in the end they win. But the long term suffering
हमको तो किसी ने गाली दी थी तो हम लोग उधर उसको या तो खून कर देंगे मन में, बात तो नहीं करेंगे लेकिन मन तो कर देते हैं, या तो फिर उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा बॉस है या हमारा कोई हमसे कोई बड़ा है या ऐसा कुछ तो भी अथॉरिटी में फिगर है, तो उसको तो बाद में कहीं ना दिखाएंगे, हमको छोड़ेंगे नहीं उसको। This area, coming back, is the area of love. It's called beam in the Mahabharata. Now we think that beam means somebody who's got infinite strength. Infinite strength to do what? Beat up people. All the time you just catch people and beat them up. Then that be Duryodhana, no? Right? If it is the Pandavas, the 5 brothers who are epitome of virtue, तो वो तो इतना स्ट्रेंथ लेके लोगों को बैठ के मारते करेगा, स्टूपिडिटी लगे। इतने हम लोग अपना भारत देश में इतनी भी समझ नहीं है, रियली सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, और कोशिश भी नहीं करते अभी तो छोड़ो भी आउटसोर्स करके रखा है तो फिल्म मेकर्स, जो आपको बनाना है बनाओ, हमको टाइम पास से देखने को मिल जाएगा तो बस हो गया। दिस एरिया इज द सेम एरिया, और कोई भी पता नहीं क्यों 5000 साल हो गए कोई भी इन दोनों बातों को कनेक्ट भी नहीं कर पाया। यही एरिया में हनुमान अपनी छाती ऐसे कर देते हैं और राम और सीता का चित्र अंदर दिखता है, सेम एरिया। वही महाभारत में एक दिन भीम जब जाता है वहां से द्रौपदी के लिए कुछ लाने के लिए, और ये जो बीच में एक बंदर से रास्ते के बीच में सो गया, हिलने को तैयार नहीं है, दिन उससे झगड़ा होता है और फिर मालूम पड़ता है तो ये तो भीम अपना, ये तो हनुमान है और ये तो मेरा बड़ा भाई है करके। दोनों का नाम वही है, पवन पुत्र, दोनों हैव कम फ्रॉम द सेम फादर। एंड दिस पवन पुत्र का मतलब, व्हाट इज पवन? व्हाट आर वी टेकिंग इन 1 2 3 5 6? Air, right? This is the first exercise. ये राम सीता होए अंदर या द्रौपदी होए, now we know that with Draupadi Bhim was the gentlest, अगर आप पढ़ोगे ना the gentlest, he was such a strong, so-called strong fellow, and being so gentle with his wife, it's the epitome of love, not of the epitome of barbaric brute strength की बात नहीं हो रही है। Love which takes in everything, मैं अच्छा तुम बुरा, मैं सही तुम गलत, यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, और टोटलिटी की बात हो रही है, सब कुछ समझ जाते हो प्यार के अंदर, ऑपोजिट्स नहीं होते। आज प्यार, if you do the right thing for me, कल गुस्सा नफरत है, if you do the wrong thing towards me, हमारा तो शेड वही है ना, हम वो लव नहीं होता है, वो अट्रैक्शन रिपल्शन चलते रहता है हमारे साथ में। मेरा अहंकार को कितना आप मसाज करोगे तो मैं आपको प्यार करूँगा, जिसको प्यार इसको अहंकार को दुर्योधन कहते हैं। So we do the first exercise, which is the chest exercise. Psychological level पे love will increase. What is that? Acceptance of each and every person, no matter what he is doing, who he is, will simply increase because you will be okay with yourself. Right now, what the reason why we get scared or angry at somebody else is because we don't know what we are. अपने आप को समाज के जो एक पैरामीटर्स के अंदर हम दिखाने को देखते हैं हमेशा कि मैं अच्छा आदमी हूँ, और मुझको जो चाहिए उसके मुताबिक अगर मुझको नहीं मिलता तो डर जाता हूँ या गुस्सा आता है, तो वी डोंट नो हु वी आर, एंड ये सिर्फ एक रिएक्शन चलता रहता है। इफ यू वर्क अपॉन दिस प्रॉपर्ली तो कितना बदलाव आ जाएगा। दिस वाज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, टेकिंग द हेल्प ऑफ द महाभारत टू अंडरस्टैंड, एंड द फिजिकल आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट। So we now move on without the explanations, and of course website के ऊपर ये महाभारत का जो जो मैंने दिया वो नहीं है, because it needs speaking about it, can't be just written over there. Second exercise, दोनों हाथ रख दिए नाभि पर, एब्डोमेन पे, नेवल के ऊपर दोनों हाथ, एंड सिर्फ यहाँ पर हम सांस लेंगे। तो 1 2 3 में पेट जाएगा बाहर, 5 6 में पेट जाएगा अंदर। 1 2 3 में श्वास लेंगे, 5 6 में छोड़ेंगे। साथ में करते हैं, चलिए 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6।
1 2 3 5 6 no 1 2 3 में पेट बाहर ना right just do it the other way around चलिए फिर से 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 no two things one again you're doing the ulta and you're breathing in jerks in installment it's a single breath no not in 3 installments नहीं फिर से 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 okay good to the music now sir you're sitting behind and I can't see you at all why don't you come and sit in this chair Then I'm Sorry? over here. okay same fast music 1 2 3 5 okay hold on 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 5 6 1 2 3 little faster 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 you lost it again 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 very good stop okay simple अभी पकड़ में आ रहा है वो बहुत बड़ा काम कीजिए थर्ड एक्सरसाइज में नीचे आना पड़ेगा हाँ अभी पहुंच रहे आप पहुंच रहे टोस्ट तक प्रैक्टिस कर रहे हैं I have not tried. Thank you. कोई बात नहीं विल डू इट एवरी डे इतना करते रहिए लेकिन अभी छोड़ना मत उसको Now, what's up? okay you have to let us look at the gentleman here keep your legs straight with your knees straight right knees down and don't bend your knees at all and now the ideal thing to do is to hold your toes huh ideal thing to do Yeah, it's Doesn't matter. So now it's not possible. Now wherever you can hold your ankle. But knees should be straight. Hold your ankle. Now don't keep your hand like the lady here. Perfect. So इनके toes को पकड़ लिया. Look straight wherever you are. Look straight. Look straight wherever you are. Look straight. You have to breathe equally in the stomach and the chest. So same thing, we'll do it with the music. थोड़ा बैक में दर्द होगा हल्का सा तो डोंट वरी अबाउट दैट अगर यहाँ पे आ सकता है क्या हाथ थोड़ा और आगे जाएगा थोड़ा और तो दर्द होगा जहाँ पे दर्द होगा वहाँ पे मेंटेन करके रखिएगा उसे चलिए इक्वली इन द स्टमक एंड द चेस्ट 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 थोड़ा और दम लगा करिए सर थोड़ा दम 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 no this is not volume enough थोड़ा दम नहीं है थोड़ा और चाहिए 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6
2, 3, 5, 6, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. Okay, stop. Good. लेकिन जैसे हो रही ना थकावट थी और इतना बॉडी हमें साथ नहीं दे रहा ना ये सब करने में, लेकिन रोज करोगे इट विल बिकम सो फ्लेक्सिबल। अच्छा, अभी आप लोग जरा याद रखना, आपका हाथ कहाँ पे था? यहाँ पे, विद द नी स्ट्रेट, और कितनी दर्द कमर में, अपना पीठ में थोड़ी सी। बोथ ऑफ यू एज देयर, एंड मैडम यू टू हैव सीन द फोर्थ एक्सरसाइज के बाद में क्या होता है, बट द अदर्स, you and you madam and you sir. Let's just do the fourth exercise. We'll sit here and we will do something about our this posture जो अभी जो हालत है, ठीक है? चौथी एक्सरसाइज में you can go back to sitting cross-legged. चौथी एक्सरसाइज में 5 बार हम लोग नाक से शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एयर लेंगे, ऐसे जोर से सर में लगना चाहिए, और एक बार मुंह से जोर से बाहर फेंकेंगे, इस तरीके से। हाँ, तो खाना बाद में आएगा, डोंट वरी। अभी भी खा के आएगा? हाँ, अभी खा गए, इसलिए वाला 5 मिनट तो हो गए। हाँ, तो 5 बार मत करना, आप 3 बार करना। तो सब लोग 3 बार करते हैं सर के सपोर्ट में। Thank you, sir. तो 3 बार करेंगे ऐसे। दम निकाल और जोर से। I'll count for you. अच्छा, ठीक है, होल्ड अप, साथ में करते हैं। 1, 2, 3 out, 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 1, 2, 3 out. Stop. You're the youngest over here, I'm sure, but you're the weakest. अच्छा, अभी एक काम कीजिए, आपके पैरों को फिर से स्ट्रेट करिए, समझिए सब लोग, और देखिए थोड़ा बैक में और थोड़ा फर्क आया क्या? आगे गए क्या? हाथ थोड़े से, थोड़ा बैक थोड़ा फ्री हुआ? मैडम यू समथिंग एट द हाँ, बैक, सम back मोर free हो गया, बैक फ्री हो गया, लेकिन ये ऐसा करने से हो गया। अच्छा। और अगर जोर से करेंगे तो कितना होगा? क्या बात है? अभी जो कर रहे हैं सब लोग, मैं कैसे कर रहा हूँ? तो सर हिल जाना चाहिए। हाँ, you will feel dizzy obviously. So much of oxygen going in your mind, in your head, you will feel dizzy. But that's just about today. Tomorrow you won't feel dizzy, and don't worry, nothing will happen. तो खाना भी बाहर नहीं आएगा, don't worry. Right? एक बार फिर से 10 बार करते हैं, लेकिन दम ना के। Yes? दम ना के करते हैं, हाँ? And you will see the result. You will feel so free. The whole thing will become so free. Huh? Life has to be fluid, not rigid. We don't want arthritis to happen to us, do we? अच्छा, फिर से 1, 2, 3 out, 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 1, 2, 3 out. Stop. Good. Much better. Now please check your state of your back again. Much more freer. हाँ, काफी हाथ आ गया। बहुत आ गया है। बहुत आ गया। How do you feel? You haven't been doing it regularly, na? I mean, I did it for a while and again stopped for a Yeah, while. but that's what I'm thinking. How do you That's feel it. now? Oh yes, I almost is getting it back. Good. Where do you stay? And just You stay somewhere here, no? In town. Yes, that's right. I remember I asked you that, and No, actually we met at the library. at where you Ian said Road. Yeah, I know. Really. The thing is that it is just about being No, in I've touch. tried to, because from all the exercises and because I have my own center and everything. Because this is, I mean, this of course internally too, it takes you, and in terms of exercise, keeping your body fit, it's something which is, I really want to incorporate it. But somehow, for some reason or the other. What center you running? You know, I have my own spiritual life, and this is something that fits very well. No, I thought maybe you are teaching something to some people, and if you are, I would want to suggest
for you to keep in touch with this, you can start, I definitely want to keep in touch with this and in time to come pass it on to others. Sure. so involve more people, and always a better way to doing it. That's always been the case. What you learn and what you gain, you share. Correct. Fifth exercise. Fourth हो गया. Fifth exercise. Fifth exercise में 5 सेकंड श्वास लेंगे. पूरे 5 सेकंड श्वास लिया. जैसे मैं भी काउंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन I'll count for you 1, 2, 3, 4, 5. मतलब 5 सेकंड हो गए. तो पूरे 5 सेकंड श्वास लिया. अगले 5 सेकंड श्वास होल्ड किया. अगले 5 सेकंड श्वास छोड़ते रहे. The entire 5 seconds keep exhaling, and उसके अगले 5 सेकंड don't breathe. यानी कि breathe in, hold, breathe out, hold. 4 things. 5, 5, 5, 5. 20 seconds का एक राउंड. मैं काउंट करता हूँ 5, 5, 5 टाइम, और आप साथ में कीजिएगा. ठीक है, चलिए. Breathe in 1, 2, 3, 4, 5. Stop, don't breathe now. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale now. 1, 2, 3, 4, 5. Stop, don't breathe. 1, 2, 3, 4, 5. Again breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. Stop, don't breathe. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Stop, don't breathe. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. You've done it for 2 rounds, 40 seconds का, but घर पे आप 3 राउंड कीजिएगा. 1 मिनट में 3 राउंड हुआ है. 6th एक्सरसाइज करते हैं. 6th एक्सरसाइज में हाँ, लेकिन सॉरी 5वीं में एक चीज कीजिएगा. फिल अप योरसेल्फ विद एयर. अभी तो बहुत तो ये भर नहीं रहा है पूरा. It's not filling up completely. Fill it up up till this point. Fill it up. 6 exercise करते हैं. In the 6th one, you take a deep breath like this. पूरा का पूरा फिर से भर लिया छाती और पेट को. राइट हैंड जैकेट doesn't matter, but let me use my right hand. थंब और 4 फिंगर्स से नाक को बंद किया. ऐसे नाक को बंद कर लेके नाक को बंद किया. बंद नाक है. चिन को यहाँ पे लॉक किया हॉल ऑफ द नेक पे, और अंदर से 5 बार मुंह में गल्प करना एज इफ यू आर स्वॉलोइंग वाटर. लेकिन इस पॉइंट राइट सिंपल. 5 टाइम्स गल्प किया. कम अप एंड लीव द एयर. क्या आपने पहले भी किया होगा? ठीक. चलिए करके सबको समझ में आ गया? Clear? Check. Take a deep breath. Block your nostrils. Lock your chin. Lock your chin now. Lock your chin. Tightly lock it and gulp for 5 times. Tightly lock your chin now. ये थोड़ा टाइट. दर्द हो रहा है क्या उसको? टाइट. रुमाल है? है. तो एक इधर का रुमाल दे दीजिए, तो फिर वो प्रेशर भी आ जाएगा. आपको तकलीफ नहीं होगी, टाइट भी हो जाएगा. फिर से करते हैं. टेक अ डीप ब्रेथ. लॉक योर नॉस्ट्रिल्स. लॉक योर चिन. ट्राई टू गल्प फॉर 5 टाइम्स. Even you should have done it in the meantime while you were looking at the camera. After that, breathe out. After हाँ, that, and let the breath out. Right? थोड़ा कान मान में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, जैसे अभी आपको हो गया शायद. तो 6 एक्सरसाइज हो गई. 6th one के बाद 3rd वापस से करना है. उसके बाद 2nd करना है और 1st करना है. रिवर्स ऑर्डर. 6th के बाद 3rd was this, 2nd was this, and 1st was this. So we began from. Abhi we'll revise it.
each one we'll do one by one without a gap, without a break. So we begin with the first, second, third, fourth, fifth was breathe in, hold, breathe out, hold. Sixth was this, again third, second, first. 6 एक्सरसाइज 9 मिनट रोज, अभी 30 सेकंड करते हैं. चलिए 1 2 3 5 6 चेस्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ ऑन द चेस्ट. 1 2 3 5 6 2 3 wait 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3. Now you're going to slow. 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6. Okay, second 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6. Okay, third, set your leg in front of you. 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6. Sir, look up, sir. Look straight and look up. 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6. Okay, fourth. 3 बार करते हैं. I'll count from 1 2 3 out 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 1 2 3 out. Okay, stop. यहाँ पे पूरा 1 मिनट करना, लेकिन 20 बार ना. चलिए, fifth exercise. Take a deep breath. 1 2 3 4 5. Stop, don't breathe. 2 3 4 5. Exhale. 2 3 4 5. Stop, don't breathe. 2 3 4 5. Again inhale. 1 2 3 4 5. Stop. 2 3 4 5. Exhale. 2 3 4 5. Stop, don't breathe. 2 3 4 5. Last. 1 2 3 4 5. Stop, don't breathe. 1 2 3 4 5. Exhale now. 1 2 3 4 5. Stop, don't breathe. 1 2 3 4 5. Relax. 6th exercise. Take a deep breath. Lock your nostrils, lock your chin, and gulp for 5 times. चलिए करके दीजिए. Do 5 rounds of that.
Third exercise. Third, second, first. Check it. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. Okay, second. 1, 2, 3, 5, 6. Quickly. 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. Okay, first, chest. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Okay, stop. थक गए ना? Let your attention be with the breath going in and going out. The mind will just keep on